Hey guys, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. So लास्ट एपिसोड में हमें ये गेम के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी तक हमें ऐसी लग रही थी कि ये ऐसे चल रही है, जो इनके बिलीव्स थे यूइतो, हानाबी एंड ये सारे कैरेक्टर्स के, कि अदर्स ऐसे बनते हैं एंड ह्यूमैनिटी वगैरह कैसे आई है, उस सब से हट के काफ़ी सारी ओरिजिनल चीज़ें पता चली। तो हम तोगेत्सु आए थे पिछले एपिसोड में, हम इनके चर्च हेडक्वार्टर्स में गए अंदर, एंड इधर हमें थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में पता चला, जिसमें ये बताया गया कि काफ़ी पहले अर्थ जब डिस्ट्रॉय हो गया था, या फिर डिस्ट्रॉय नहीं इनहेबिटेबल हो गया था, ह्यूमंस रह नहीं सकते थे, तो वो लोग मून पे चले गए थे रहने। एंड उसके बाद फिर 2020 में, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स पहले, ये 2020 प्लस 3000 ईयर्स पकड़, यानी कि समथिंग 5000 के आसपास का चल रहा होगा इनका टाइम। तो उस टाइम पे अर्थ पे वापस आए मून से, एंड उन्होंने फिर न्यू हिमुका रेजिमेंट, यानी कि अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसको फाउंड किया। एंड उसके बाद आई थिंक ये तोगेत्सु का ये वाला एरिया भी बना होगा, एंड जो साइरॉन है ये भी बने होंगे। तो जब लोग ये आए थे, जब न्यू हिमुका रेजिमेंट बना, उसके बाद एक रेड कलर का आसमान पे एक बेल्ट आ गया। यहाँ से तो दिख नहीं रहा, बट आई थिंक वो जो थोड़ा सा ऐसे ग्लोई सा दिख रहा है आपको आसमान में, वही है शायद एक्सटेंशन बेल्ट जिसको बोलते हैं। एंड हमें बताया गया था कि उसमें से अदर्स पैदा होकर आते हैं एंड ह्यूमंस पे हमला करते हैं। बट एक्चुअली हमें ये पता चला पिछले एपिसोड में कि अदर्स एक्सटेंशन बेल्ट के भी आने के काफ़ी बाद आए, एंड मून पे अभी भी लोग बचे हुए अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हमें मिला। तो चांसेस है कि मे बी हो सकता है कि न्यू हिमुका रेजिमेंट जिसने भी फाउंड किया, उन्होंने मे बी एक्सपेरिमेंट वगैरह करके अदर्स बनाए हो, एंड एक्सटेंशन बेल्ट भी उन्होंने बनाया हो, ताकि जो मून पे जो बचे हुए लोग हैं वो अर्थ पे क्यों नहीं है, वापस ना आ पाए। अब वो क्यों नहीं आ पाए, इसका कोई हमें रीज़न अभी तक दिया नहीं है। तो जो एंडिंग की थोड़ी बहुत चीज़ है ना, कि मैंने बताया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बनाया होगा है ताकि मून वाले लोग इधर ना आ पाए, तो वो मेरा एजम्पशन है। एंड उसके पहले का जो भी था वो सब हमें पिछले एपिसोड में पता चला। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि अपेरेंटली तोगेत्सु वाले जो लोग हैं, लोग बोल लो या सॉफ्टवेयर या एंड्रॉइड्स बोल लो, क्योंकि उधर मुझे कोई जिंदा इंसान नहीं दिखा, सब कुछ ऑटोमेटिक था एंड एंड्रॉइड्स थे उधर कुछ। तो वो लोग यूइतो के ब्रेन को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग कैसे तो भी वहाँ से भाग के निकले, एंड बस अब यहाँ से निकलना है वापस। अब पता नहीं लेकिन किधर जाएंगे हम वापस, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यू हिमुका रेजिमेंट ने हमें एज अ ट्रेटर घोषित कर दिया, तो हम उधर तो जा नहीं सकते। ये उठा क्यों नहीं रहा है, ये लीव उठा ले। हाँ उठा लिया। एंड कसाने की टीम जो थी वो लोग भी उधर थे, उनको हमने बचाने में थोड़ा सा हेल्प किया, एंड अब हम यहाँ से भाग रहे। यप, देयर आर एनिमीज ऑब्वियसली, तो इन सब से लड़ना पड़ेगा यार। You're using my power, Yuito. That one explodes. Don't get too. If your body begins to burn with fire, it'll drain your health. So be careful. बढ़िया। सब मरे क्या, या मर गए सब? तो ये वाला Those मिशन followers हम who attacked us all look like Kasane and Kyoka. Does that mean that all the Togetsu followers are design children? अच्छा हाँ, एक और चीज़ डिज़ाइन चिल्ड्रन के बारे में बताना भूल गया। तो ये पिछले एपिसोड में पता चला कि कुछ डिज़ाइन चिल्ड्रन करके एक नया टर्म आया है, तो क्योका एंड कसानी ये सब डिज़ाइन चिल्ड्रंस। अब डिज़ाइन चिल्ड्रंस का मतलब है कि कोई एग्जिस्टिंग पर्सन के जीन्स कुछ उठा के एक डिज़ाइन करके जेनेटिकली एक दूसरे बच्चे को बनाना, ताकि उसमें कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अपीयरेंस एंड पावर्स वगैरह है। तो कसाने और क्योका डिज़ाइन चिल्ड्रंस है, जबकि यूइतो जो है, यूइतो एक डर था, यानी कि उसके पास पैदाइशी पावर नहीं थी, उसके पास एक्सपेरिमेंट करके पावर आई गई है। तो काइंड ऑफ दोनों ही एक्सपेरिमेंट से ही बने, बट यूइतो के पास पैदा होने के बाद पावर आई, एंड कसाने के पास पैदा होने से पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड पावर्स थी। अच्छा, इस सब के अलावा आपको पता होगा गेम की स्टार्टिंग में यूइतो ने बताया था कि वो जब छोटा था तो उसे किसी ने बचाया था, जो काइंड ऑफ सिमिलर दिखती थी कसाने जैसी। तो मैंने बताया था मे बी टाइम ट्रैवल वगैरह कुछ होगा गेम में, बट ऐसा कुछ नहीं है शायद। मुझे लग रहा है जिसके जीन से कसाने को बनाया गया है, मे बी उसने बचाया यूइतो को। ये चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, ये वाली पॉसिबिलिटी, क्योंकि दैट एक्सप्लेन्स कि कसाने उसकी जैसी क्यों दिख रही थी। वैसे ये एरिया हम पिछले 2 एपिसोड से कर रहे हैं, ये तीसरा एपिसोड है, तो मुझे लग रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बचा नहीं होगा ये। It's down. Now die. Go! Look at everything you've got. Here you go. Yuito! Yeah. बढ़िया।
और बचे क्या कोई? आई थिंक बाकी सब गए। I'm ready. Take that. लेट्स गो। There. Leave it to me. It's over. बढ़िया। Attack. अरे और है कितने सारे हैं इधर। इन सबको खत्म करूंगा, ये इतने आसानी से मर जाते हैं। बढ़िया। You took it down, Yuito. Now die. Come on. Go, Yuito. नाइस। Hey. Looks like there's a resource reading. मैक्स जेली। एक और सेव पॉइंट हमें मिल गया। बॉस फाइट कुछ होने वाली है क्या? हो सकता है। Doesn't look like anyone's following us. Maybe they gave up. Looks like it, but stay on your guard. I wonder if Kasane's team got out all right. Whoa, other reading closing in. ओके, It's a big one. बिग वन। यप, मुझे लगा ही था बॉस फाइट हुआ नहीं क्योंकि ये जोन में अभी तक एक भी बॉस फाइट नहीं हुआ एंड ये थोड़ा सा खुला एरिया था, मुझे लगा पक्का। चलो देखते हैं कैसा बॉस है। ओके, he seems pretty big. Now there are others? अरे ये नहीं यार, इसका दिमाग भी मैल फंक्शन करने लग गया। Not now. No. There's no way I can drink that. I'm fine. I can fight. मुझे लग रहा है हमें वो एम्प्यूल पीना पड़ेगा, वो जो कैप्सूल्स बनाए हुए। That ice is like armor. But my power might be able to melt it. The shell is broken. Give it everything you have. Good. I need you, Gemma. Here we go. Great, I'm soaked. It's fine. पानी मार रही है चेहरे पे से। Nabi. The water is too strong to get any closer. Yuito, use my power to get inside the water. Here we go. अबे यार भाग गया ये। हाँ, ये वापस आर्मर पहन इसीलिए भागा था। ओके, गॉट इट। मैं काइंड ऑफ अंदर जाके आर्मर पहन के बाहर आ गया। Should be able to break the outer shell and keep attacking. Someone's in trouble. Page. I have to. ओ ब्रेन ड्राइव, कोई तो इंजर हो गया। I must do more. Let's regroup. Shell breach confirmed. Put the pressure on. नाइस। Let's go. बढ़िया। Go, Yuito. Don't get burned. Flame dry. Damn it. That was close. Use this. Yuito, a member is in
danger. वापस भाग गया। अभी आर्मर पहन के आएगा जाके। Is everyone okay? Some help, Luca! Yuito! I hit the outer shell. I think I can break it if I focus my attacks. बढ़िया। चल तो इसका। Damn, come on! The shell is broken. Give it everything you have. Still fun. इसका क्रश गेज खत्म ही नहीं हो रहा है। I need to support the injured. ओ भाई इसका क्रश गेज खत्म ही नहीं हो रहा है। बॉस ओवरऑल उतना टफ नहीं है बट बहुत ज्यादा लाइफ इसकी काफी ज्यादा है। बच गया। Do you need help? Don't get burned! Someone's in trouble. Pay attention. This other's punches are as heavy as its size implies. It would be reckless to approach with no strategy. Come on! बस दो और फिर उसका क्रश गेज टूट जाएगा। I need to support the injured. You guys good? Thanks a lot. I need you, Gemma! Where's the enemy? Here we go! टूट जा क्रश गेज, कम ऑन। ओ भैया। Sumera is in danger. Is everyone okay? Thanks a lot. अरे भाग गया यार। हील हील Still हील। fight! Come on! I hit the outer shell. I think I can break it if I focus my attacks. Successfully reached the shell. Attack now. कम ऑन इसका क्रश गेज खत्म है ऑलमोस्ट। यस लेट्स गो। बढ़िया अच्छी खासी लाइफ गायब कर दी इसकी। Good. Here we go! ब्रेन ड्राइव यूज करते हैं थोड़ा। नाइस। ओके लेट्स गो। देखते हैं ब्रेन ड्राइव ब्रेन फील्ड से क्या कर सकते हैं। There's nothing I can't do. I'm feeling really good. बाहर निकल वापस। हमने काफी पेल लिया। अगर हम ब्रेन फील्ड ज्यादा यूज करेंगे ना इसकी लाइफ कम हो जाती है। वैसे जब ब्रेन फील्ड यूज करते हैं ना तो यूटो के डायलॉग ऐसे लगते हैं जैसे कि ये पागल हो गया है। जैसे मेनियक्स बात करते हैं ना वैसे। Damage to outer shell confirmed. Keep going and break it. चल गया। Give it everything you have. गया 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 गया। बढ़िया। फाइनली। No way! This is it! That was impressive. यार उसके ऊपर पूरा एक पहाड़ ही गिरा दिया ऑलमोस्ट। बड़ा सा चट्टान। नाइस। अच्छा बॉस फाइट Target था। eliminated. And everyone's safe. How's your head? Don't strain yourself. I'm better now. Sorry I made you worry. Yuito, can you and your platoon hear me? Kasane! Oh, I'm glad you're okay.
Are you near us? Yes, but we're closer to Togetsu than you, and we're still running. Let me make a suggestion. You learned something in there, right? Why don't we exchange intel? And we have a lot to talk about. And here I was thinking she wouldn't want to talk. Okay. I was thinking the same thing. Good, that settles it. We'll be waiting halfway up Hieno Mountain. Roger that. See you then. अब उन लोगों को इंटेल चाहिए. Sorry. नहीं तो I should have checked with you guys first. अभी तक वो लोग हमें कुछ बताना भी नहीं चाहते Kasane is थे. after. If that's what you want to do, I don't mind. But can you trust her? I told you that she saved me in Togetsu. I think she had a reason for trying to kill me. What are you gonna do if she doesn't want to talk and just attacks you? Then I'll fight. Okay, if you say so, Commander. Let's... If I'm right about how she sounded, we should be able... Okay, I'm a चलो little आगे worried बढ़ते. about meeting up with Kasane. I mean, I hope we can talk to her, but... I'm not just going along blindly, but it was your decision. I want to respect that. Yeah. तो पहले तो ये लोग हमें कुछ बताते नहीं है एंड अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो कसाने और उसकी टीम बात करना चाहती है. ओके कम से कम ये पता चल जाएगा कि वो हमें मारना क्यों चाहती है. पहुंच गया लग रहा है. They're here. Yep. It's all of Kasane platoon. Kasane! Looks like all of you made it out okay. सब है 5 के I was able 5. to rescue them thanks to your help. I should be thanking you. I would have been taken over by Babe if you hadn't been there. Hey, Kasane. You're not going to try and kill Yuito again, are you? I already told you. She was the one that saved me. I know. But I want to hear her say it. You have all the right in the world to doubt me. In fact, I don't blame you for it either. Yes, I think it's best to talk for now. We should talk and find a better solution, rather than just forging ahead on assumptions. It took me too long to come to this decision, and I apologize for that. Something's different about you. Can you tell me what happened? Why did you try to kill me? I know this will sound ridiculous, but please hear me out. I tried to kill you because I was asked to. By you. 50 years in the future. ओके तो टाइम ट्रैवल का भी कुछ सीन है. 50 years in the future? What are you talking about? I completely understand how you feel. If I hadn't seen it with my own eyes, there's no way I would have believed it either. Do you remember when Captain Seto died on the Kunad Highway, and we saw that strange sight? My time travel power, the red strings, activated. Then we jumped 50 years into the future. What? You went to the future? Red strings. That's right. You said you have dreams about those. It wasn't a dream. I have the ability to travel through time. A power called red strings. And Yuito, apparently you have the same power as well. What? ओके I know टाइम we both ट्रैवल. use psychokinesis, but that's not what you're saying. It seems you understand these red strings a lot better than the rest of us. Just where did you get that knowledge? Was that from the future too? Yes, it was. We saw Yuito in the future. He told me quite a lot. He also asked you to kill me. Right. I'll tell you everything I learned in the future. That should answer everyone's questions. ओके आई थिंक अभी काफी सारे should डायलॉग्स I ask एक्सचेंज first? होने वाले हैं. यप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डायलॉग कमिंग अप. तो एक एक करके सबसे पूछना पड़ेगा कि किसने क्या देखा. तो मैं ये सबके सब चले गए थे क्या फ्यूचर? क्योंकि कसाने ने बोला वी ऑल वेंट टू द फ्यूचर समथिंग समथिंग वी करके बोला. हो सकता है ये सब गए हो फ्यूचर में. The thing that appears when the red strings are used is like a device to time travel. That's apparently what the Kunad Gate is. ओके तो कूनाड गेट आपको याद होगा जो ब्लैक होल टाइप का बना था जनरल कारेन से लड़ने के बाद. तो ओके उसकी वजह से रेड स्ट्रिंग्स आर यूज्ड लाइक अ डिवाइस टू टाइम ट्रैवल एंड द थिंग दैट अपीयर्स इन द ओके दैट्स अपेरेंटली व्हाट. ओके तो कूनाड गेट को यूज करके मैं भी टाइम ट्रैवल कर Normally, it सकते हैं. appears only for an instant and disappears immediately, but this time, left open like that, the gate will eventually swallow the world. It was really bad 50 years in the
तो मे बी फ्यूचर में यूइतो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देता होगा, इस वजह से फ्यूचर की यूइतो ने बोला In कि that मुझे world, मार the देने के Kunad लिए. Gate was much bigger than it currently is here in our time. ओके The end of the world. It seems that in that future, the gate had expanded so much that nothing. ओके गुरु का क्या बोल रहा है? First, none of us could believe what we had heard in the future. It was just too. We got some news in Seiran, then a bunch of stuff happened, and now we can But I have to admit, it's gotta be hard to believe just hearing it for the. ओके कसाने से सबसे लास्ट में पूछेंगे. It was when Kasane used the red strings that the. But when her power activated, it resonated with yours, Yuito. That's why. On top of that, the gate seems to be slowly expanding. And looking at the news we got from Seiran, it more or less matches up. ओके The power we both have is actually gravikinesis. It just looks like psychokinesis. ग्रेविकिनेसिस, अब ये क्या चीज़ है? When that gravikinesis becomes strong enough to travel through space and time, it's called red strings. ओके तो अपेरेंटली हमारी जो पावर है वो साइकोकिनेसिस नहीं, समथिंग ग्रेविकिनेसिस है. तो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है वो अक्रॉस डायमेंशंस एंड स्पेस एंड टाइम भी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकती है, तो उस वजह से रेड स्ट्रिंग्स बन I गए. had no idea about that either. ओके The Kunad Gate will disappear if Yuito dies. That's what future Yuito said. ओके That तो just इसलिए can't be true. It was already too late in the future, which is why he asked me that favor. He wanted me to kill you in the past, so the Kunad Gate could be eliminated before it got too large. So my power affected the Kunad Gate. I've had a bad feeling since listening to that vision in Togetsu. I can't believe I was right. So you knew. Yeah. I didn't want to believe it, but it's true. So, the me in the future... I guess I just wasn't able to end it myself. That's not true. The you in that time was great, and you right now is special too. I have to admit, I never thought you'd be complimented. That makes me feel a little better. That reminds me, how is your brain doing? Has it settled? Yeah, it's fine. I'm getting by. All right, we should exchange intel. अच्छा इनको तो पता ही नहीं कि ये First डिजाइन and चिल्ड्रंस foremost, we लॉन्ग. got some questions. Yes, of course you would. Kyoka, are you one of the design children from Togetsu? Yes, I'm a clone made in Togetsu. My genes come from the founder of the Togetsu faith, Dr. Hitoyo Pope. The city is filled with chosen psionics, designed from the same genetic data as me. We are the children of Togetsu. ओके I see. I guess that's why Kyoka and Dr. Pope look the same. We were shocked when we saw Dr. Pope's vision in. I hate to ask this, but if she was one of the Togetsu followers, Yes, Kyoka was a spy. She was spying on Kasane. But that's not the case anymore. She decided to live as one of us. I vouch for Kyoka. She's definitely not our enemy. Yeah, I believe you. What? That was fast. The way Kasane looks at Kyoka is proof enough. Though, that's kind of an embarrassment. Honestly, I don't know much about Kyoka, so I can't really make this decision. But I do know Kasane. I wanted to talk to her to decide what to do, and I thought it was best to trust her. If I trust Kasane, then I trust the people she does. ओके आई थिंक Shiden, सारे there's no मेंबर्स need to get so वापस आने riled वाले up. हैं. You know very well this is the kind of person Yuito is. Yeah, I just remembered how stupid he is. Hey, Kasane. If Kyoka is one of the... What? What are you talking? In Togetsu, we saw design children with the same... Yes. That's a weird way to say it. This is the first I've heard of this. Care to extrapolate? I remembered a little from when I was a child in Togetsu. I remembered Mother. From what I recall, I was told I was one of the design. It only just came back to me, so it doesn't feel real. That. Oh, I see. I'm sorry. It must be a painful memory for you. I'm sorry, You're very kind, Hanabi. But of course you should have asked. Don't worry about it. You're so nice to her, Kasane.
Really? I wasn't trying to be. Anyway, Yeah, there is. If you know anything about humans, इनको कुछ नहीं पता Hit your head or something? Oh, so you guys don't know about this? Wait, what he said is true? Yes. All right. I guess we should explain what we've been told. we learned all of this after looking through Togetsu's अच्छा सब archive. बता दिया चलो So, सही है I honestly don't know if we should really believe all of it. मुझे लगा वापस सुनना But if पड़ेगा you were a Togetsu spy, Kyoka, you would know if this is true or not. yes, that's indeed what we were taught. But if that was also part of the conspiracy, then... Actually, no. It's true. It's all for real. What do you mean, Kagura? Tsugumi, don't look at me like that. I can't stand it when you look at me like that. Kaguro, there's a lot I want to ask you. But for now, tell us about history as Togetsu sees it. Do all Togetsu believers know this? Right, about that. The faith. That's all a lie. Just a way to get... Besides, the place is mostly made up of design... I must say, it didn't look like a religious establishment to me. So does that mean that you are one of the design children as well, Now, I said mostly, didn't I? I'm a colonist. Get real! Even if there actually were colonists from the moon, that would have been 2,000 years ago. Cold sleep. Yes, exactly. A few dozen colonists are being kept in cold sleep in a Togetsu facility. okay They wake us up in turns to check on the state of the Earth. And then we're supposed to contact the moon. Hold on. Does that mean you're from the same generation as Yakumo? Look, I don't expect you to believe me right away or anything. But it's the truth. The people of New Himuka wanted to live on Earth. So those that wanted to return to the moon made Togetsu. Togetsu doesn't care about New Himuka or Seiran. They're an egotistical lot that wants to return to the moon instead of living on this crappy, other-filled planet. But as long as the extinction belt is there, they can't go back. Okay. Not only that, there's news that others are attacking the moon. So they got to thinking, what can they do to save their homeland and escape Earth? They need to make it so the colonization never even happened in the first... The red strings. The time travel power. I see. They want to go back in time and negate it all from ever happening. भाई Wouldn't humanity story eventually बहुत ज़्यादा attempt to complicated colonize हो Earth रही है यहाँ again पे and repeat this To be precise, the plan is to only take the moon and Earth back in time with a few exceptions. Is that even possible? Taking only a portion of the universe back in time. They believe the red strings can do it. They plan to leave records of this timeline's history in the areas that were not taken back in time, so future generations won't attempt to colonize Earth again. Hang on. I'm getting confused. That's so outrageous. Whether you want to believe it or not, Togetsu actually managed to create the red strings to carry... Kasane is the result of that. Although, it's pretty strange how Yuito has a similar power. Let's suppose everything he said is true. That means this isn't really the time to be squabbling over... If Togetsu were to get what they're after, then none of us would have ever existed. No, that's not right. We can't let them succeed. We're all here trying to... Kaguro, why would someone at the center of Togetsu's plan reveal all this? Can we assume that you are planning to abandon them as well? Ruining their plan is something I've been working towards since the beginning. That's why I joined them, to get in the way. That sounds great and all, but how are we supposed to believe you? You don't have to. If you've got a problem with me, I'll walk. But whatever happens, I'm not going to sit back and let them get away with erasing this history. I left my I won't let them take her existence, too. Kaguro means it. I can tell. It's been a long time since I've seen him like this. Tsugumi. Tsugumi knows Kaguro best. I think, besides, I have a feeling you trust him already. Yeah, if Tsugumi trusts him... And if Yuito does, then I do too. Of course, I'll kill him if he betrays us.
Of course. I keep making fun of them for being naive, but that's what ends up... If we're going to believe Kagero, then we have to believe all of the history about the colonists from the moon, and then figure out what we can. We're stopping Togetsu's plan. That's all we can do. We need someone who can move Are you going to ask New Himuka for help? We're fugitives. Even so, we have to. That doesn't mean I forgive them for the things they're doing. If they know what Togetsu is trying to do, they might realize their terrible actions are all in... What if we asked Seiran for help? If they know about the Togetsu threat, they might realize that New Himuka isn't who they should be fighting. I wonder. As far as I know, both New Himuka and Seiran should have a clear understanding about the moon colonists and their history. On top of that, they're both scheming. At least it's better than nothing. I don't want to just sit here and... Indeed. So, we should split up and give it a shot? Okay, Yes, तो एक let's do that. ये लोग सायरन के पास जाएंगे. You go to New Himuka. Yep, and हम लोग न्यू हिमुका You के go try पास. explaining things to Seiran. Okay, चलो. Let's do our best. तो ये एंडिंग का जो सेगमेंट था आज के एपिसोड का काफ़ी प्लॉट हैवी था. तो अप्रेंटली कागुरो जो 2000 ईयर्स पहले जो कॉलोनिस्ट आए थे मून से अर्थ में उसमें से एक है. एंड उनमें से कुछ लोगों को क्रायो स्लीप या कोल्ड स्लीप में रखा गया, यानी कि उनकी एज वगैरह कुछ बढ़ती नहीं है. एंड आई थिंक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेंचुरीज के बाद उन्हें जगाया जाता है ताकि वो लोग फीडबैक लेके वापस मून वालों को बता सके कि क्या अर्थ पे रहने लायक है वगैरह अर्थ ये सब. बट जो टोगेत्सु वाले यानी कि वही जो कॉलोनिस्ट जो भी बचे कुछ है उन लोगों का प्लान है कि वापस मून पे जाना. अब फिलहाल तो रेड बेल्ट बन चुका है तो वो लोग जा नहीं सकते, तो उन्होंने जो ये रेड स्ट्रिंग्स वाली पावर्स है उसको सिंथेसाइज संभव बना लिया, क्योंकि ऑब्वियसली कसाने की भी अंदर वो पावर है एंड यूइतो के पास वो पावर्स है कैसे पता नहीं. एंड उसको मैनिपुलेट करके वो टाइम को चेंज करना चाहते हैं एंड मून से वापस अर्थ पे लोग जब आए उससे पहले उसको रोकना चाहते हैं, यानी कि एक्चुअली अभी जो भी रियलिटी है ये पूरी इरेज हो जाएंगी काइंड ऑफ. तो या पिछले एपिसोड में स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हुई थी, अभी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है. तो काइंड ऑफ अभी तोगेत्सु सबसे बड़ा विलन बन चुका है जिसके पास हम एक्चुअली में हेल्प मांगने आए थे, यानी कि छुपने भी आए थे काइंड ऑफ, क्योंकि हिमुका और सायरन पहले दोनों विलन थे. अब हिमुका और सायरन बच्चों की तरह लग रहे हैं तोगेत्सु के सामने, या फिर तोगेत्सु जो करना चाहती है. ओके, तो जल्दी से हाइड आउट जाते हैं एंड एपिसोड रैप अप करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है. अच्छा, मुझे लग रहा है फास्ट ट्रैवल हो जाएगा हाइड आउट में. हाँ, यप. ओके, एपिसोड रैप अप करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में प्रोबेबली अगला फेज चलूंगा. फेज 9 आई थिंक, ये फेज 8 चल रहा था. I didn't think we'd find out so much in Togetsu. This is all so unexpected. All we did was go to Togetsu, but Good work, everyone. That was a lot to take in. it's... The world we normally see is so small, but our horizons have expanded. I'm glad we're on better terms with Kasane, too. Hey, everyone. About the Kunad Gate. How your power is affecting it? Oh, Haruka let me see Seiran's investigation into it, but the results were the same. At least we know it really is, well, getting bigger. What if Yuito doesn't use his power? If he avoids combat, for instance? No, I looked at the Kunad Gate investigation papers as well. At this point, I couldn't really find a link between Yuito's specific actions. What? So it doesn't have anything to do with Yui? No. You could say that just the existence of his power is affecting it. It's pretty much safe to assume that the gate will continue to expand as long... Right. I am sorry for how that sounded, but it's probably best that you know since it does concern... No, I'm glad you told me. Nothing will change if I try to ignore it. If it's like you say, then I don't need to worry about staying out of fights, do I? We do not know all the details about the Kunad Gate, but I think that is correct. What are you thinking, Yuito? I want to ask you all a favor. What is it? After hearing all that in Togetsu, I'd be lying if I said I didn't think that killing me was the only option. But there's still things I need to... We can never say for certain that there is no other way unless we search... Just like we didn't know about the moon until we went to Togetsu. There might be a way to stop the gate that we don't... I'm sure Kasane had the same idea, and that's why she stopped... So... I want you to help me think of a way to get rid of the...
You had me a little anxious for a moment. Of course we'll... Gemma's right. That was the plan. Don't forget about my info network. I'll find out even the most secret information. Okay, let's go. This isn't just... तो अभी ये लोग एक ऑल्टरनेटिव प्लान ढूंढना चाहते हैं. There has to be a way. Obviously एक प्लान तो ये है कि यूइटो को ही मरवा दो. But I But guess I यार was a कुछ little और प्लान worried. होगा पक्का. So, thank you. तो अभी पहले तोगेत्सु वालों को यूइटो स्टोरी स्टैंड बाय फेज 8. ओके, तो स्टैंड बाय फेज 8 यानी कि अगला फेज का नाम है फेज 9. तो ये वाला एपिसोड रैप अप करते. रैप अप करने से पहले एक बार ब्रेन मैप पे देख लेते हैं हमारे पास 12 पॉइंट्स है, क्या क्या लेना चाहिए. हेल्थ ग्रेजुअली रिकवर्स आउटसाइड कॉम्बैट. ओके, दैट विल बी नाइस. ओके, 6 पॉइंट गए ऑलरेडी और हमारे पास अभी 6 बचे. ये क्या है? कैन परफॉर्म 4 कॉन्जिक्यूटिव साइकोकिनेसिस फॉलो अप अटैक एंड रश फॉलो अप अटैक. 4 कॉन्जिक्यूटिव की ज़रूरत है क्या? अभी मैं कितने कर सकता हूँ? ये क्या है? वाइल इन डैशिंग टू परफॉर्म अ फॉरवर्ड वेपन अटैक. ओके, और क्या चीज़ है यहाँ पे? Learning the skill increases the psychokinesis gauge by 50% while learning second. Oh, 50%. Okay, that seems good क्योंकि कभी कभी मेरे पास पावर्स ख़त्म हो जाती है. बढ़िया. Increase the number of objects while in brain field after hitting enemies. So however, it does not work against strong foes whose HP has been depleted. आई थिंक मैं 2 ब्रेन पॉइंट बचा के रखता हूँ. बाद में जब हमें और चीज़ें मिलेंगी तो तब अपग्रेड कर लेंगे. विद दैट सेड आज का एपिसोड रैप अप करते हैं गाइस. थोड़ा सा बॉन्डिंग एपिसोड्स वगैरह खुले होंगे वो मैं ऑफ रिकॉर्डिंग कर लूँगा. नेक्स्ट एपिसोड में अगला फेज यानी कि फेज 9 स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फेज 8 तक कंप्लीट हो गया. अभी हम हाइड आउट में तो काइंड ऑफ स्टैंड बाय फेज है. इसके बाद फेज 9 चालू होगा जो मुझे लग रहा है प्रोबेबली हम वापस न्यू हिमुका रेजिमेंट के पास जाने वाले हैं एंड उनको मनाने वाले कि तोगेत्सु के साथ मतलब तोगेत्सु को रोकने में मदद करें. एंड कसाने की टीम जो है वो साइरान के पास गई है. तो ऐसी वैसे इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.